Hallo Leute, ich heiße Gunjan Gulati und ich unterrichte Deutsch seit 10 Jahren. Hello everyone, my name is Gunjan Gulati and I teach German and I'm teaching it for a long time. Today we will talk something about German language and examination specifically. How to crack exam, what is the language about. So let's go further and see. B2 गए थे examination, B2 गए थे का exam. एक डर, एक खौफ, इट्स समथिंग बिग फॉर एवरीवन. कैसे पास करें, हाउ टू पास, व्हाट टू डू, हाउ टू स्टडी, बिग मैटर टुडे, हॉट टॉपिक ऑफ द डे. सो लेट्स टॉक अबाउट B2 एग्जामिनेशन. आज बताते हैं आपको व्हाट इज B2, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू राइट. लेट्स टॉक अबाउट दैट. B2 एग्जाम गए थे हैज 4 मॉड्यूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड हियरिंग. Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören, these are the 4 modules. What you have to do, कितना पढ़ना है, कितना मार्क्स चाहिए, what you have to do, let's talk about it today. So first of all we talk about Lesen. Lesen is a overall 65 minutes exam. It's like 60 minutes का हमको एग्जाम करना है. We have to write examination and 5 minutes is for filling the answer sheet. Then we come to Hören. Hören is approx 45 to 50 minutes. 50 minutes मिलते हैं हमको एग्जाम में. Audio is played, audio play होता है and we have to mark the answers. Then we come to Schreiben. Schreiben is approx 75 minutes. 1 से सवा घंटे का, 1 घंटे का approx एग्जाम रहता है. In that we have to do 2 tiles of Schreiben. हमें लिखना होता है उसमें Meinung, blog writing and email writing. Speaking, Sprechen. Sprechen is approx 15 minutes we get prior for the preparation. 15 minutes में पहले मिलते हैं to prepare our topic, pen down the key points and 15 minutes बाद में to give the examination in the front of the examiner. So this is the about the 4 modules. ये रहते हैं हमारे 4 modules German language के B2 examination. And same modules are there in the other levels also, but timings का difference है. Today we are focusing more on B2. आज B2 की बात करेंगे ज़्यादा. It is like सबके मन में डर है, एग्जाम नहीं पास हो रहा. Lot of people are failing. Why they are failing? क्यों फेल हो रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पे लैक कर रहा है? We going to solve these things today. Okay, and then 4 modules. सबसे बड़ी बात, एक मिथ है सबके माइंड में कि हमें सारे एग्जाम इकट्ठे देने हैं. That is why people are failing. No, it is not so. You can give all modules together or all modules separate, or maybe you can combine 2 modules. That is also possible. Splitting is up to you. जैसा आपका दिल करे उतना प्रिपेयर करे, उतना एग्जाम दे. And to cross B2 exam, to pass B2 exam क्या चाहिए? What is the requirement? Out of 100 में से अगर आज बात करें, so 25% vocab पे फोकस करना है, 25% grammar पे फोकस करना है, 25% is your practice, how much efforts you put, and what is the last 25%? Last क्या है? Can you people tell me? 25% depends on your confidence. If you have confidence, you will win it. If you know all these three things, grammar, vocab, everything, practice is also there, but confidence is lacking, you'll simply fail. So the topmost thing is confidence along with vocab, grammar and practice. So keep learning guys, stay tuned.